students, I am Mukesh Pareek and I am going to analyze the paper of JEE Advanced 2015. I am having with me the paper 1 of JEE, code 7 and I hope आप लोग भी अपना पेपर साथ में लेकर बैठे होंगे. जैसे मैंने पेपर देखा, मैंने देखा कि पेपर में 8 इंटीजर क्वेश्चंस थे पर सब्जेक्ट, 10 मल्टीपल क्वेश्चंस थे और 2 मैच द कॉलम थे. मार्किंग स्कीम थी इंटीजर क्वेश्चंस +4 एंड नो नेगेटिव मार्किंग. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग थी, +4 फॉर करेक्ट आंसर और -2 फॉर रॉन्ग आंसर. तो जैसे ही मैंने पेपर देखा, मैं इतने सारे पेपर दे चुका था और मेरे को पता था कि अब आगे क्या करना है. तो मैंने सीक्वेंस ये बनाया कि पहले मैं इंटीजर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. शुरुआत करते हैं फिजिक्स के पहले क्वेश्चन से. फिजिक्स का पहला क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था. इसमें पूछा गया है कि जो पॉइंट पी में मार्क कर रहा हूँ उस पर S1 और S2 दो स्लिट्स हैं, वहाँ से जो वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है पी पर, तो कंडीशन पूछी गई है कि पी पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन दी गई है. उसके लिए कंडीशन होगी कि S2 से आने वाली वेव और S1 से आने वाली वेव के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो m लैम्डा के बराबर होना चाहिए, वेयर m इज एनी इंटीजर. जब देखा जाए S2p और S1p का जो वेव का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा म्यू ऑफ वाटर इनटू डिस्टेंस S2p माइनस S1p. S2p और S1p इक्वल है जिसकी वैल्यू है √d² + x² और म्यू हमारे पास गिवन है 4/3 क्वेश्चन में. Solving this equation we get x² = 9m² λ² minus d². और इसको क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो विल गेट p = 3 एज द आंसर. बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पर बेस्ड था. मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला. फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट की इमेज निकालेंगे मिरर फार्मूला लगा के मिरर से, एंड देन वो जो इमेज आएगी उसकी लेंस से इमेज निकालेंगे लेंस फार्मूला लगा के, और इससे हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी. m2 के लिए हम लेंस मेकर्स फार्मूला लगाकर लेंस की जो नई वेवलेंथ आएगी इन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, तो उससे हमारा लेंस का सेकेंड फोकल लेंथ आ जाएगी, नई फोकल लेंथ. और उसके बाद हम फिर से वही मिरर से इमेज निकालकर और लेंस से इमेज निकालकर m2 की वैल्यू निकाल लेंगे. तो इसमें डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और उसके बाद m2/m1 की वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछी गई है उसकी वैल्यू 7 आती. थर्ड क्वेश्चन पर चलें तो दैट वाज रादर एन इजी वन. इसमें हमको एक लाइन चार्ज दिया गया है और ABCD एक रेक्टेंगुलर सरफेस दी गई है और उससे हमको फ्लक्स निकालना है. तो देखिए, हम पहले एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएंगे जो AB और CD से पास हो रही है, और जो फ्लक्स AB और CD से बीच में जो कर्व्ड सरफेस होगा सिलेंडर का उससे पास होगा, वही फ्लक्स ABCD से भी पास होगा. एंड उसके लिए हम पहले निकालेंगे जो कर्व्ड सरफेस होगी वह इस एक्सिस पर कितना एंगल बनाए. उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर दिस इज √3/2 × a, दिस इज a/2. ये एंगल आता है हमारा 30 डिग्री. एंड तो जो कर्व सरफेस AB और CD के बीच में जो सिलेंडर की कर्व सरफेस है वो एक्सिस पर 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, और पूरे कर्व सरफेस पर जो बाय गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होगा लाइन चार्ज का वो होगा λL/ε0. ये होगा 360 डिग्री एंगल के लिए, और 60 डिग्री एंगल के लिए बाय एलिमेंट्री थ्योरम हमारा फ्लक्स आ जाएगा λL/6ε0 एंड वी गेट L = 6. फिजिक्स का फोर्थ क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी रेगुलर क्वेश्चन. इसमें हमको देखना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है E प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू hc/λ प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम होगी -13.6 × 1/n². दैट इज इक्वल टू 10.4 जो काइनेटिक एनर्जी हमको क्वेश्चन में दी गई है.
HC की वैल्यू भी हमको गिवन है। ये सब बात इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कर रहे हैं। 1242/90 ये होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी, माइनस 13.6/n² इक्वल्स टू 10.4। 1242/90 इसकी वैल्यू आती है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो काफ़ी हमारे प्रैक्टिस में किए हुए रहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें केवल एनर्जी कंजर्व करवानी है। पहले केस के लिए हमारी इक्वेशन बनेगी GMM minus GMM by R plus half mv², this is initial energy, that is equal to minus GMM by X, X is final position from the center। और दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे GM/x² इक्वल्स टू 1/4 GM by R², जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया है। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड केस के लिए हम लिखेंगे माइनस GMM by R प्लस हाफ m v एस्केप का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। एस्केप वेलोसिटी के केस में हम ऐसा मानते हैं कि फाइनल एनर्जी 0 है, और यहाँ से हमारी v एस्केप की वेलोसिटी आ जाएगी v के टर्म्स में, एंड दैट कम्स आउट टू बी v√2। तो आंसर इज n इक्वल्स टू 2। बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये लगातार तीसरा क्वेश्चन था पेपर का जो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड था। इसमें हमको जो काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी डिस्क की, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस में अगर हम जो बी से लाइन पास हो रही है उसको अगर हम बेसिक लाइन माने, डेटा लाइन, तो mg इंटू 30 मीटर इक्वल्स टू हाफ mv², दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ I ओमेगा²। डिस्क का हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, एंड फॉर प्योर रूलिंग ओमेगा इक्वल्स टू v/r। और दोनों केस के दूसरे केस के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे mg इंटू 27 मीटर इक्वल्स टू हाफ mv फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा फाइनल स्क्वायर। एक और बात, पहले शुरुआत में भी डिस्क की काइनेटिक एनर्जी थी दोनों केस में, तो हाफ mv1² ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ I ओमेगा1², और दूसरे केस में हाफ mv2² प्लस हाफ I ओमेगा2²। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, और एंड गेट v2 इक्वल्स टू 7। फिजिक्स का 7th क्वेश्चन, वंस अगेन इट वाज बेस्ड प्योरली ऑन फार्मूला। पहले बात, स्फेरिकल स्टार्स हैं तो और ब्लैक बॉडीज हैं, तो उससे जो पावर एमिटेड होगी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा a t⁴, जहाँ पे a सिग्मा इज Vn's constant, a is area and t is temperature। a will be equal to 4πr²। तो इस फॉर्मूले से हम Pa और Pb निकालेंगे टेम्परेचर के टर्म्स में। we have been given the Ra/Rb equals to 400 और Pa/Pb equals to 10⁻⁴। यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर्स का रेशियो आ जाएगा Ta/Tb। फॉर रेशियो ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा बी, हम जानते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटू टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा ए और लैम्डा बी का रेशियो आ जाएगा Tb/Ta। तो हम Ta/Tb का रेशियो जानते थे, लैम्डा ए अपन लैम्डा बी का रेशियो भी हमको पता है, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2। 8th क्वेश्चन, इट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। जैसा इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इनिशियली जो पावर रिक्वायरमेंट थी विलेज की, दैट वाज सपोज S, और NT ईयर्स बाद, where T is the half life of radioactive fuel, it becomes S/8, that is 12.5%। हम जानते हैं कि एक हाफ लाइफ बाद जो अमाउंट होगा फ्यूल का वो हाफ हो जाएगा। सो NT हाफ लाइफ बाद अगर वो 1/8 हो रहा है तो N must be equals to 3, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है रेडियोएक्टिव, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डीके। सो वी गेट N इक्वल्स टू 3। सारे इंटीजर क्वेश्चंस करने के बाद आई मूव्ड ऑन टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, इट वाज कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड रादर एन इजी वन, सो इट बूस्टेड अप माय कॉन्फिडेंस। इसमें द कंसेप्ट यूज्ड इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लाइक देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क
तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वुड बी एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम वुड बी एम आर स्क्वायर 8/9 ओमेगा प्लस एम आर वन स्क्वायर 8/9 ओमेगा and plus m r2 square 8/9 omega, where m is the mass of those two particles and r1 and r2 are the respective distances from the axis. And solving, we have m equals to m by 8 and r1 is already given, that is 3/5. So solving this equation we get r2 equals to 4/5 r. 10th question, another conceptual one, and I would suggest कि पेपर देते समय आप ऐसे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें. They take less time and अगर आपके concepts clear हैं तो there is little chance of getting them wrong. बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें हमारा ये कंसेप्ट यूज होता है कि दो चार्जेस के बीच में जब चार्ज डिस्टेंस कम होगा देन द फोर्स वेदर इट बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव वो मैक्सिमाइज होता है, बढ़ता है. तो इस केस में हम देखेंगे जिस तरफ हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं मिडिल चार्ज का, जिस लाइन चार्ज की तरह, उसके साथ उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा और उसके बाद फिर हम डायरेक्शन से हम देख सकते हैं कि किस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा. एंड में जो फोर्स आएगा चार्ज पर वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है देन इट विल बी एसएचएल, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आता है, सेम डायरेक्शन में आता है डिस्प्लेसमेंट के, तो वो चार्ज फिर उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा. सो इस हिसाब से इस कंसेप्ट से हमारा आंसर आता है सी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 11, इट वाज अनदर फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्टिक्स. द फार्मूला यूज्ड हियर वाज mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r for reflection from curved surface. हमको यहाँ दो कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा और फाइनल जो इमेज आएगी वो सिंस द रेज आर पैरेलल टू द एक्सिस तो फाइनल इमेज होगी v इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर. सो इससे हमारा d का जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर. 12th क्वेश्चन, एक और इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. इसमें हमको जो कंसेप्ट यूज करना था वो था इफेक्टिव लेंथ का. लाइक इस क्वेश्चन में हमारे पास जो अगर इन दो पॉइंट्स को हम ए और बी मार्क कर दें तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस हम इस पूरे वायर को एक इफेक्टिव लेंथ ए बी इफेक्टिव लेंथ का वायर मान सकते हैं. एंड उसके बाद हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब करंट का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल होगा तो फोर्स जीरो होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो देन फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ होगी वायर की वो दैट विल बी 2 times L plus R. तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी A, B एंड C. 13th क्वेश्चन, एक बार फिर इजी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप जितनी भी पढ़ाई करें सारी बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए और फिर आपको IIT क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजी लगेंगे. सो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज था वो था VRMS is equals to √3 RT by m, और जो स्पीड ऑफ साउंड होती है किसी भी गैस में दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा RT by m. तो यहाँ से हमारा VRMS का रिलेशन भी आ जाएगा दोनों के लिए. हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है और हीलियम का एटॉमिक मास भी है, और इसी के साथ साथ गामा के लिए हम लगाएंगे CpH2 प्लस Cp हीलियम अपॉन CvH2 प्लस Cv हीलियम, और इससे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो भी आ जाएगा. और इसके साथ साथ टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी 3/2 CvH2 RT प्लस 3/2 CvHe RT. और इससे हम एवरेज एनर्जी निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे एंड दैट वुड बी नंबर ऑफ टोटल एनर्जी पर मोल. 14th question, it was not a difficult one but it included a lot of calculation. मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस एंड में करें क्योंकि अगर आप अभी इस पर टाइम और ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो एंड में आपको एंग्जाइटी होगी, टाइम कम रहेगा. तो इसलिए इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस एंड में अटेम्प्ट करें. इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, लाइक देयर वाज 2 रेजिस्टेंसेस एंड दोनों पैरेलल में होंगे क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा. एंड हम जो फार्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस का दैट वुड बी रो L by A. L दोनों केसेस के लिए 50 मिलीमीटर होगा एंड एरिया हम दोनों के लिए निकाल सकते हैं. एंड जो फाइनली फार्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस के लिए दैट वुड बी 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड द आंसर वी गेट इज C.
फिजिक्स का 15 क्वेश्चन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक लॉजिक पर बेस्ड था। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक का पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी होगा। और इसमें हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे दैट वुड बी एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू ई वी नॉट प्लस एच सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इससे हमें जो और एक और चीज़ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जब the wavelength is lesser than threshold wavelength। तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा that would be A and C। फिजिक्स का 16 क्वेश्चन ये एरर एंड मेजरमेंट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एंड ये आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको सारे लॉजिक्स क्लियर है, सारे कंसेप्ट क्लियर है। और इसमें जो कंसेप्ट यूज था वो था वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट होगी, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स दैट वुड बी इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर होगा 1/8 सेंटीमीटर और जो वर्नियर स्केल डिवीजन होगा दैट वुड बी 1/8 इंटू 4/5 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ अगर स्क्रू गेज की पिच P है देन द लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज वुड बी P/2 सेंटीमीटर एंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज वुड बी P/100 सेंटीमीटर। 17 क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मैंने जो मेथड अपनाया था वो था C का डायमेंशन जैसे होगा M0 L1 T-1। ऐसे G और H के डायमेंशनल फार्मूलाज भी हमें पता है और इसके बाद आई एज्यूम्ड कि M का जो डायमेंशनल फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ G, C and H इट इज G की पावर GA, C raised to the power B and H raised to the power C। C dash sorry A dash B dash and C dash। जब हम इन दोनों डायमेंशनल फार्मूलाज को कंपेयर करेंगे then we will get three equations in terms of A, B and C and solving this we will get A dash, B dash and C dash respectively for same for L and इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा that will be A, C and D। Okay, now we'll move on to the part 2 chemistry of the paper 1 of JEE Advanced 2015। 21st question of the paper, it is given in the question that X gives to Y this reaction is delta G naught equals to minus 193 kilojoule per mole and the energy released in this reaction is used to convert M positive into M tri positive। To find the number of moles of M positive oxidized, we will equate the energy released in the reaction X gives Y to the energy released in the reaction M positive gives M tri positive। Now 193 kilojoules equals X, if X is the number of moles of M positive oxidized into F into 2 into E naught of the reaction which is 1/4। Solving this equation we will get X equals to 4। The second question of chemistry involved the concept of solutions and coordination compounds। We know that depression in freezing point is equal to Kf into molarity into water factor। Solving this equation we get water factor and by using that we can easily find the value of the number of chlorides in the coordination sphere of the complex which comes out to be 1। The 25th question was a theoretical question and if you know the structure of N2O3 then you will get to the answer easily। The actual structure of N2O3 is there are 2 lone pairs on 2 oxygen, 1 lone pair on this nitrogen and 3 lone pairs on this oxygen। So counting all the total number of lone pairs we come out to the answer 8। The 26th question was from coordination compounds and if you knew the order of spectrochemical series then this was an easy one। SCN negative is a weak field ligand and it will not cause pairing and CN negative is a strong field ligand and it will cause pairing। So in Fe tri positive we are having 5 electrons in a d subshell, so in CN negative will cause pairing and we will be having 1 unpaired electron, so the magnetic moment will be √3 and in the case of SCN negative the magnetic moment would be √35 since we have 5 unpaired electrons, so the difference would be around 4.2, so the nearest integer is 4, we will get the answer 4। And the 27th question, you need to have a clear idea of hybridization and molecular shape and geometry।
The question asks the number of linear molecules among the given ones. O3 and SCO2 are bent in shape, whereas ICl2 negative, I3 negative and XCF2 being linear, but still they have d orbital, they involve d orbital in hybridization. Whereas the initial 4 molecules BeCl2, N3 negative, Cl2, N2O and NO2, they all 4 are linear molecules and do not involve d orbital in hybridization. So the answer would be 4. The 28th question was a very good one. Generally, I developed an idea while reading the question, how to approach the question, but in this question I read it twice and I had no clue where to start. So I decided to move on instead of wasting time on this question. And you can do this too. This helps. You should not waste your time on a single question. You should try to attempt more and more questions. In the end, after I attempted the whole paper, I came back to this question and it took me 2 to 3 minutes to crack this. In H negative, since H negative is not a one electron species, the 2s and 2p states will not be degenerate. So the first excited state would be 2s and the second excited state would be 2p. In 2p we have 3 orbitals, so the degeneracy of the second excited state of H negative would be 3, and that's the answer. Now coming on to the multiple choice questions of chemistry, the first question of biomolecules was rather an easy one. The question provided the structure of D plus glucose and we were asked the structure of L minus glucose. The mirror image of this D plus glucose will be the enantiomer of this, and it would be the L isomer of glucose, and also it would have opposite rotation than D plus glucose, and thus the mirror image of this would be the L minus glucose, and so the only option that matches this is A, so A is the correct answer. The 31st question of chemistry was a direct one from NCERT involving the stability of oxidation states. We know that Cr plus 3 and Mn plus 2 are the stable oxidation states of chromium and manganese respectively. So thus Cr dipositive will oxidize into Cr tripositive acting as a reducing agent, whereas Mn tripositive will reduce to Mn dipositive acting as an oxidizing agent, and both Cr dipositive and Mn tripositive will have 4 electrons in the outermost d orbital. So they both will have D for electronic configuration, and so the right answer is ABC. 32nd question, again a direct question from NCERT involving metallurgy. This is based on electrolytic refining of copper. In this electrolysis, acidified copper sulfate is used as electrolyte, and the impure copper from the anode gets oxidized, moves into the solution and gets deposited on the cathode, and the impurities get settled as anode mud, and thus the answer would be B, C, D. The 34th question was a good question from involving rate of reaction and thermochemistry. Initially I was confused, but as I thought it became clear. Since the reaction is an exothermic reaction, increasing the temperature would result in decrease in the final percentage yield, but the rate of reaction increases with increasing temperature. So initially the percent yield of the reaction would increase when we increase the temperature, but finally the percent yield would be maximum for less temperature, and so the answer would be B. The 35th question, once again an easy question from solid state. Let us suppose you have 1 unit cell of cubic close packed array of oxygen atoms. So we will be having 4 oxygen atoms, and we have 4 octahedral holes and 8 tetrahedral holes. So we will be having 4m aluminium ions and 8n magnesium dipositive ions. Now the total charge on aluminium and magnesium ions must cancel out the total charge of 4 oxygen atoms. So we have 4m into 3 plus 8n into 2 equals 4 into 2. Only the A option satisfies this condition, and thus the correct option would be A. The 36th question was the easiest question from isomerism. For optically inactive compound, we must have symmetry in the compound. Both the options A and C after hydrogenation will be having a chiral carbon, which is this and this,
But in B and D, after hydrogenation there will be no chiral carbon, and so B and D would be the correct option since they are optically inactive after hydrogenation. The 37th question was also a regular question of aldol condensation. You must have come across many questions of this type during your practice. There will be a formation of 6 Maillard ring, and after the aldol formation, since we have H positive heat in the second step, there will be catalytic dehydration, and the most stable conjugated ketone would be the major product. The 38th question involves one of the basic reactions of dienes. The H positive from HBr will attack on this carbon, and after conjugation the more stable 1,4 product will be formed, which is D. After completing the multiple choice questions of all 3 subjects, I came to match the column, and the first match the column of chemistry was an easy one. If you remember the table from metallurgy chapter in NCERT, then this would not be a problem. And this is a fact based question and it's very easy. Moving on to mathematics, the first question was based on application of derivative. We have a cylindrical container with inner radius r and outer radius r plus 2. The thickness of the walls of the container would be 2 mm, and we have a base of circular disc which is 2 mm in thickness, and the radius would be r plus 2 mm. Now the inner volume of the cylinder would be pi r square h, which is given as V, and the volume of the material used would be pi r plus 2 whole square into h minus pi r square h plus pi r plus 2 whole square into t. Now this is the volume of the material used. Now we want to minimize this volume of material used, and so we differentiate this with respect to r and equate it to 0. As given in the question, the inner radius comes out to be 10 mm. So we will get the value of h from here, and we can get the value of v, which is pi r square h, and thus v comes out to be 1000 pi, and so the answer will be 4. The second question of mathematics was a good one, and as soon as I read the question I knew it was from Newton-Leibniz theorem. The area of the region bounded by x equals to 0, y equals 0, y equals to fx and x equal to a would be integration of fx dx from 0 to a, and this is equal to f dash of a plus 2 as given in the question. Let this be equation 1. Now by Newton-Leibniz theorem, f dash of x would be d by dx of f of x. Now applying the Newton-Leibniz theorem in equation 1, we will get f of a equals to f double dash of a. Now since we know f dash of a, we will get to know the value of f double dash of a, and thus we can find f of 0, which comes out to be 3. The 45th question was based on binomial distribution law. We know that if P is the probability of success and Q is the probability of failure in any task, then out of n attempts, the probability of R successes, which is PR, would be equal to NCR, P raised to the power R and Q raised to the power n minus R. And the probability of getting at least 2 heads when the number of times a fair coin is tossed is n, then the probability of at least 2 heads would be 1 minus probability of 0 heads plus probability of 1 heads. Applying this formula of binomial distribution law, we get the answer, which comes out to be 8. The 46th question was on P and C. In the first case, n is the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Now let us take all the 5 girls as one object. So we are having total 6 objects which can be permuted in 6 factorial ways,
and girls, the phi girls itself can be permuted in phi factorial ways. This will be equal to m. And for calculating m, we first permute the phi boys at 5 places in phi factorial ways. Now we apply gap method. We'll be having 6 gaps. We choose any 2 gaps out of those, and we divide the girls in groups of 4 and 1. So that would be equal to phi c4 into 4 factorial and into 2, since the 4 girls and the group of 4 girls and the 1 girl can be interchanged. So this would be equal to m, and by calculating m by n, we get m by n equals 5. The 47th question was based on parabola and circle. We have been given a parabola y square equals to 4x and a circle. Now the equation of normal of parabola in parametric form is dx plus y equals 280 plus 80 cube. Now we know that the parameters of the ends of lattice rectum are plus minus 1, and so distance, perpendicular distance from the normal of the center of the circle 3, minus 2 would be equal to the radius r, since the normal is changing to the circle. And now taking any one line, any one normal of the parabola, and equating its perpendicular distance from 3, minus 2 as r, we get r equals root 2. So r square equals 2, which is the answer. The 48th question was based on definite integral, and in this question we need to find the value of definite integral x f of x square upon 2 plus f of x plus 1 dx from minus 1 to 2, and fx is given into the question. So we break up these limits into some parts according to our convenience, like minus 1 to 0, plus 0 to 1, then 1 to root 2, and then root 2 to 2. In these 4 intervals individually, the function in the integral part that does not change, and we can easily integrate these 4 parts, and the total integral I comes out to be 1 by 4. So the answer 4i minus 1 would be equal to 0. The 49th question was from vector and 3D, and it was not the toughest one. ऐसे बहुत सारे questions हम practice में पहले ही कर चुके होते. To find the direction cosines of the line L, the line L is parallel to both planes P1 and P2 according to the condition given in the question. So it will be perpendicular to both the normals of plane P1 and P2. So we will get the direction ratios of line L by cross product of the normals of P1 and P2. And to find the locus of feet of perpendiculars from point on L to the plane P1, we find the foot of perpendicular from the origin on the plane P1, and the direction ratios of the line on the plane will be the same as the direction ratios of line L, and so this we will get the equation of line. In fact, the locus of the feet of perpendiculars drawn from points on L to the plane P1, and the satisfying the condition, the equation, we will get the answer. The 50th question once again was from coordinate on parabola. Let this be the parabola y square equals to 2x. What I did was, this is point O origin, and I assumed 2 points P and Q with parameters T1 and T2. Now since the question reads that the circle with PQ as diameter passes through vertex O, then thus the angle POQ would be 90 degree, and this, the slope of line OP, if it is like the slope of line OP into the slope of line OQ would be minus 1, since both of them are perpendicular. One condition we get from this equation, and another would be the area of triangle. Like area of triangle is equal to x1 y1 1, x2 y2 1, 0 0 1, 1 by 2. This equals to 3 root 2. We get 2 conditions, and on solving these 2 conditions we get the values of T1 and T2, and so we will get the answer. And the 52nd question was based on differential calculus, and
it included pure calculation. It was lengthy one, so I'd suggest you to attempt this type of questions in the end. Coming to this question, we have been given there's a family of circles whose centers lie on the straight line y equals to x. Now let us assume that the center is h comma s and the radius is r. So the equation of the circle would be x minus h whole square plus y minus h whole square equals r square. Differentiating both sides with respect to x, we get equals 0. Now from here we get the value of h as y dash plus x upon 1 plus y dash. Now again differentiating both sides, now since h is constant, we get 0 equals 1 plus y dash into y dash square plus y into y double dash plus 1 minus y dash plus x into y double dash upon 1 plus y dash whole square. Now the numerator must be 0, and solving this we get y minus x into y double dash plus y dash into y dash square plus y dash plus 1 equals to 0. Comparing this with the equation, we get p and q as function of x, y dash and y dash, and thus we get the answer b and c. The 55th question was on vectors, and we make a triangle PQR as given in the question. The QR vector is A vector, the RP vector is B vector, and the PQ vector is C vector. By triangle law, we get A vector plus B vector plus C vector equals 0. And from this we get minus times A vector equals to B vector plus C vector. Taking mod both sides and squaring, we get mod A whole square equals to mod B whole square plus mod C whole square plus 2 times B vector dot C vector. And now we have values of mod A, mod B and B dot C in the question, so we will get mod of C equals 4 root 3. And now since we have mod of B, mod of C and B dot C, we can find the value of angle theta between vectors B and C. And now coming to the options, we check the options with the given values. A option and D option are the right ones, and for C we see that it is a mod of A cross B vector minus C vector. Right, A vector is minus times B vector plus C vector, and solving this we get this is also the right answer. So the right answer must be A, C and D. The 56th question was a very easy one on metrics, and the only thing you need to know to do this question are the properties of symmetric and skew symmetric matrices. As given in the question, x and y are skew symmetric matrices, so x equals to minus times x transpose and y equals to minus y transpose, and since z is a symmetric matrix, z equals to z transpose. Applying the properties, the transpose of AB equals to B transpose into A transpose, we check the options, and the right options we get are C and D, because C and D are the skew symmetric matrices. The 58th question was a good one from 3D. We have a plane P1 which is y equals to 0 and P2 x plus z equals to 1. Now P3 is given a plane which is different from P1 and P2 and passes through the intersection of planes P1 and P2. And now let us assume that the plane P3 is AX plus BY plus CZ equals D. Now we have 2 points 1, 0, 0 and 0, 0, 1 which lie on planes P1 and P2. So they lie on plane P3 also. Satisfying these 2 points in the plane P3, we get A equals C equals D. Now the equation of the plane transforms into AX plus BY plus AZ equals A. Now using the other condition given in the question, which is the distance of point 0, 1, 0 from plane P3 is 1, we get B minus A upon under root of B square plus 2A square equals 1. Squaring and
comparing, we get A equals minus 2B. So our equation of the plane transforms into thus the final equation of the plane comes out to be 2x minus y plus 2z equals 2. Now the third condition given in the question is the distance of point alpha comma beta comma gamma from plane P3 is 2. Thus we get 2 alpha minus beta plus 2 gamma minus 2, the mod of this, upon under root of 2 square plus 1 square plus 2 square equals 2. Thus comparing this with the options given in the question, we get B and D as the correct answer.